Assalamu alaikum students, you are watching SK online lectures. How are you all? I hope you are great. Today we discuss the verb. The verb is a word which says something about the activity or action of a person or thing. वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी या अमल को ज़ाहिर करे फ़ेल कहलाता है. It occupies the central position in a sentence because it is a word by which we say something about the subject. फ़ेल फ़िक्रे का लाज़मी और अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसके बगैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, Farah was plucking the flowers. Zubair was singing a sweet song. पहले जुमले में plucking और दूसरे जुमले में सिंगिंग. जो पहले जुमले में प्लकिंग है वो फ़रा के फूल तोड़ने के अमल को और दूसरे जुमले में सिंगिंग ज़ुबैर के गाना गाने के अमल को ज़ाहिर करता है. सो ये दोनों फ़ेल हैं. प्लकिंग और सिंगिंग ये दोनों वर्ब्स होंगे. इसके बाद हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ अ वर्ब. Verbs are divided into three main classes. फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड है intransitive verb and last one है helping verb. ये हमारे पास verbs की थ्री काइंड्स हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, यानी फ़ेल मुतअद्दी की. ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी बोलते हैं. अ वर्ब which requires an object in a sentence is called transitive verb. A verb which requires an object in a sentence is called transitive verb. फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जिसके बाद मफ़ूल का आना ज़रूरी होता है. यानी ऐसा फ़ेल सिर्फ़ फ़ाइल तक महदूद नहीं रहता बल्कि मफ़ूल के ऊपर सरज़िद होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पियन rings the bell. The farmers grow carrots. अब इन जुमलों में आप देखें कि रिंग्स और ग्रो फ़ेल मुतअद्दी हैं क्योंकि इनके बाद मफ़ूल की ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे, ये फ़ेल लाज़िम पे. अ वर्ब which does not require
object in a sentence is called intransitive verb। यानी फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसके बाद मफ़ूल की ज़रूरत महसूस ना हो, तो ऐसा फ़ेल इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बेल rings, the carrots grow in winter। अब इन जुमलों में रिंग और ग्रो फेल लाजिम है क्योंकि इसके बाद मफ़ूल की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एज आ ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ नहीं हो सकते, उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कम, गो, डाई, फॉल, लाई, sleep, seem, appear, laugh, weep, etc. The following verbs can never be used as transitive verbs। ये आपने माइंड में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जो ये हमारे पास थर्ड काइंड है वर्ब की। इसे हम उर्दू में इमदादी फ़ेल भी बोलते हैं। इट इज़ अ वर्ब which is used to help the principal verb to make the meanings clear। It is a verb which is used to help the principal verb to make the meanings clear। वो फ़ेल जो किसी दूसरे अहम फ़ेल की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि उसके मानी और टेंस की वजाहत की जा सके, इमदादी फ़ेल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, she was smiling। सेकंड एग्जाम्पल है, he will play hockey। इन जुमलों में was और will इमदादी फ़ेल हैं क्योंकि ये बिलतरतीब स्माइलिंग और प्ले की मदद के लिए इस्तेमाल की गई हैं, सो ये इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलेंगे। Sometimes the helping verbs may also be used as full verbs। For example, she is a good player of badminton।
सेकंड एग्जांपल है he did his duty well. I have a pair of beautiful pigeons. इन जुमलों में is, did, have इमदादी फेल की बजाय पूरे फेल के मानी अदा कर रहे हैं। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो एज अ फुल वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। अब हम टू बी पे आ जाते हैं। is, am, are, was, were, been, being. The following verbs are the different forms of verb. is, am, are, was, were, been, being ये verb की मुख्तलिफ forms हैं। I hope you enjoyed this lecture. If you like this, please share with your friends. Keep watching. Allah Hafiz.